Which of the following can be used to navigate a document? Option B is correct. Hyperlinks. Hyperlinks को डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Before moving a sub-document to another location within a master document, you must switch to master document के अंदर ही सब डॉक्यूमेंट से किसी दूसरी लोकेशन तक जाने के लिए कौन सा व्यू इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट. आउटलाइन व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर क्रिएटिंग मास्टर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से पहले यू मस्ट स्विच टू, आपको कहाँ पर जाना पड़ता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट. आउटलाइन व्यू. Suppose you wanted to create an autocorrect entry that would type the word. We regret to inform you that your submission has been declined. Of following choices, which would be the best name you could assign to the entry? यहाँ पर अगर हमने ऑटो करेक्शन लगाना है तो एक जो ना सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कौन सा आप असाइन करेंगे? ऑप्शन बी इज करेक्ट. सबडेट. Which menu do you choose to shade word and paragraph? पैराग्राफ और वर्ड को शेड करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट. ए इज करेक्ट. फॉर्मेट, बॉर्डर एंड शेडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूजिंग रिबन, वेयर शुड यू गो टू एक्टिवेट द रूलर ऑन योर डॉक्यूमेंट? रिबन को यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट पर रूलर को किस तरह आप एक्टिवेट कर सकते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्यू रूलर. Next question is the column command is located on dash tab. Column command किस टैब पर मौजूद होता है? Option D is correct. Page layout. Next question. The header and footer command are located on dash tab. Header and footer command कहाँ पर मौजूद होता है? Option B is correct. Insert tab. Next question is which of the following can you change यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हुए आप कौन सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं? ऑप्शन ए इज़ मार्जिन्स. ऑप्शन बी इज़ पेज ओरिएंटेशन. ऑप्शन सी इज़ वर्टिकल अलाइनमेंट. ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ अबव. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. पेज सेटअप डायलॉग को इस्तेमाल करते हुए आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू रीड थ्रू डॉक्यूमेंट यू मे. डॉक्यूमेंट से रीड करते हुए ऑप्शन ए इज यूज द एरो की, ड्रैगिंग द स्क्रॉलर बॉक्स और स्क्रॉलर बार. ऑप्शन सी यूज एन एंटर की टू गो डाउन लाइन बाय लाइन. ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओनली ए एंड बी. In Excel, dash may not contain in formula. Excel में सर्कुलर रेफरेंस एज ए फार्मूला के तौर पर मौजूद नहीं होता. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सर्कुलर रेफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ यू टाइप A1 इज इक्वल टू B1 इन सेल C1. अगर आप सेल C1 में A1 इज इक्वल टू B1 ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? Option B is correct. True or false. Next question is to show hide the grid line in Microsoft Excel 2007. Microsoft Excel 2007 में ग्रिड लाइन को हाइड और शो करने के लिए कौन सा ऑप्शन जो ना यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट. पेज लेआउट, ग्रिड लाइन, व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू अपीयर इन. एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू किस साइड पे होती हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट. राइट अलाइन. न्यू कमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड अंडर डैश टैब. ऑप्शन सी इज करेक्ट. रिव्यू टैब. इन मैक्सिमम हाउ मैनी शीट्स कैन बी सेट एज डिफ़ॉल्ट व्हाइल क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक. न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए डिफ़ॉल्ट में कितनी शीट्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ऑप्शन बी इज करेक्ट. 255. विच वन ऑफ द लास्ट कॉलम हेडर इन एक्सेल 2007. एक्सेल 2007 में लास्ट कॉलम हेडर कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट. XFD.
Next question is, what is the short key to insert new sheet? What is the shortcut key in insert new sheet in a current workbook? Option D is correct, Shift plus F11. Each option allows you to bold all the negative value within the selected cell range. Selected cell range के अंदर किस ऑप्शन से तमाम वैल्यूज नेगेटिव की जा सकती हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग. टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस, पहले से मौजूद प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंट्रोल प्लस ओ. टू insert न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज, पहले से मौजूद प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंट्रोल प्लस एम. एनिमेशन स्कीम्स कैन बी अप्लाई टू डैश इन प्रेजेंटेशन. एनिमेशन स्कीम प्रेजेंटेशन में कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती है? ऑप्शन ए ऑल स्लाइड्स, ऑप्शन बी सिलेक्टेड स्लाइड, ऑप्शन सी करंट स्लाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव. तमाम पर एनिमेशन स्कीम अप्लाई की जा सकती है. Ellipse motion is predefined. Option C is correct, animation scheme. After choosing a predefined template, which option has been chosen to change the background color? Background color को चेंज करने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कलर स्कीम. बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए कलर स्कीम इस्तेमाल की जाती है. Next question is, a file which contain ready-made styles that can be used for a presentation is called. ऐसी फाइल जिसमें पहले से बने हुए स्टाइल्स मौजूद होते हैं जो कि प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स ऐसी फाइल्स हैं जहाँ जिसमें प्रेजेंटेशंस के लिए पहले से मौजूद रेडीमेड स्टाइल मौजूद होते हैं. The arrangement of elements such as title and subtitles, pictures, tables, etc. is called. Option The arrangement of elements such as title, subtitle, pictures, tables, etc. are called. Option A is correct, layout. इन तमाम को अरेंजमेंट, इन सब की अरेंजमेंट को हम लेआउट कहते हैं. From where we can set the timing for each object. हर ऑब्जेक्ट के लिए हम टाइमिंग कहाँ से सेट कर सकते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्लाइड शो, कस्टम एनिमेशन. नेक्स्ट, हाउ कैन द स्लाइड शो बी रिपीटेड कंटिन्यूसली? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लूप कंटिन्यूसली until escape, ESC. PowerPoint presentation is a collection of. Option A, slides and handouts, speakers notes, outlines. Option D, all of above. Correct answer is all of above.